Welcome learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी। डियर लर्नर्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, स्पीड, declaration of variables और एरर डिबगिंग का डिफरेंस बताया था पाइथन और सी का। लेकिन जो एरर डिबगिंग है वो आपने देखा होगा कि वहां पर वीडियो में ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो आज मैं पाइथन और सी का जो डिफरेंस है, जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एरर डिबगिंग। Error debugging in Python is simple. Why? Because it takes only one instruction at a time. Python जो है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये एक एक इंस्ट्रक्शन को लेके एरर डिबगिंग करती है। बट अगर हम सी की बात करें, being compiler dependent language, error debugging is difficult in C language. C में कंपाइलर जो है वो पहले एंटायर सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, फिर उसके बाद एरर डिबगिंग होगी। Next point is
function renaming mechanism. Python supports the mechanism of function renaming. It means कि जो same function है, it can be used by two different names. It means कि same function को दो different names के साथ यूज किया जा सकता है. But in C, it does not support function renaming. The same function cannot be used by two different names. Next, अगर complexity की बात की जाए तो Python is a simple, easy to read, write and learn language. क्यों? क्योंकि इसके सिंटेक्स जो हैं वो बहुत इजी है. बट अगर सी के सिंटेक्स देखा जाए तो पाइथन से थोड़े से डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज memory management. Python supports automatic garbage collection, for memory management. But in C, the programmer has to explicitly do the memory management. It means Python में memory management ऑटोमेटिक है, बट सी में प्रोग्रामर को मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज applications. Python is a general purpose programming language and can be used for the programming of
microcontrollers. On the other hand, C language can be used for the development of video games, compilers, cloud computing, etc. Dear learners, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना so that उनकी भी हेल्प हो सके। डियर लर्नर्स, ये जो पाइथन और सी का डिफरेंस है ये सारे डिफरेंसेस आपके वाइवे के क्वेश्चन पेपर में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज built-in functions. Python has a large library of built-in functions. और अगर हम C की बात करें, library of built-in function is quite limited in C. Implementing data structures. Python gives ease of implementing data structures with built-in insert append function. बट अगर हम C की बात करें, इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करने के लिए स्पेसिफिक एडिशन और फंक्शन is required. Next is pointers. Pointers functionality is not available in Python. Pointers are frequently used in C language. Dear learners,